there is Ram in Ramadan and Ali in Diwali. There is an overlap और इस overlap का एक ही मतलब है, इंसान पहले इंसान होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बात. Anyways, I very often get asked कि बाबा हिंदू थे या मुसलमान. So आज की वीडियो is in context of that. I will give my arguments and आप डिसाइड करें कि वो हिंदू थे या मुसलमान. To help you decide कि वो कौन थे, I will list out 7 points, but आपको जरूर एंड तक देखना पड़ेगा to really find that out. बाबा lived in a masjid, but उस मस्जिद को वो कहते थे द्वारका माई. In that masjid, Baba allowed Ram Navami festival and Sandal procession of Muslims to happen on the same day. He allowed the coexistence of Eid ki namaz and Gokul Ashtami festival together. He also allowed construction of Tazia or Taboot for Mohammedans and Laddu Gopal Jhula for Hindus at the same very place. He always uttered Allah Malik through his lips, always, and also gave many practical demonstrations of the Hindu holy Upanishads. Though according to Hindu customs his own ears were pierced, but he also strongly advocated the Muslim custom of khatna or circumcision. He freely ate meat and fish with fakirs, but like a pure Hindu Agnihotra, always kept a sacred fire burning alive in the masjid. This sacred fire was called the dhuni. And the sacred ash from this dhuni is called udi, which was distributed freely as prasad. We will discuss about the greatness of this udi separately in a different video. For now, let's come back to the topic. So friends, क्या आप decide कर पाए कि वो कौन थे? हिंदू थे या मुसलमान थे? No one can tell. Because वो एक सच्चे सदगुरु थे. He was a pure soul and who appeared to different people in different forms depending upon the level of their faith and patience. I think बाबा के रिलीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बिहेवियर के बारे में बात करें. बाबा एब्सोल्युटली लव्ड रिपेयरिंग टेम्पल्स. जितने ओल्ड डायलेपिडेटेड टेम्पल्स थे शिरडी के, उन्होंने वो सब के सब रिपेयर करवाए. बाबा यूज्ड टू कलेक्ट दक्षिणा फ्रॉम वेरियस डिवोटीज, ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन देयर विल एंड कैपेसिटी. और उस पैसे को वो इकट्ठा करके जरूरतमंद लोगों में, फकीरों में, गरीबों में चैरिटी के लिए इस्तेमाल करते थे और रोज रात को फिर से एक बारी फकीर बन जाते थे. He cured many diseases. बहुत सारे कपल्स को उन्होंने इश्यूज दिए जिनके बच्चे नहीं होते थे. बहुत सारे शराबी, कबाबी, जुआरी लोगों को उन्होंने ठीक बनाया. ऑल बाय हिज मेयर दर्शन. कभी उनके सपनों में आके या कभी कभी अपने ऊपर सारी उनकी एफ्लिक्शंस, नेगेटिविटीज और प्रॉब्लम्स लेके. He was absolutely a pure soul. He always had full knowledge of past, present and future. And whenever a devotee really needed him, he was always there for him or her. He was omnipresent. Basically, बाबा के जो तौर तरीके थे वो हमारे ऊपर से निकलने वाले थे, अनफैथमेबल थे, हमारी कॉमन विजडम से बहुत ऊपर थे. Now, as a parting note, as a concluding note, आप हिंदू हो या मुसलमान हो, इस देश में मुद्दा तो सबका एक ही है. रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर. And each time you guys fight with each other, you fall into petty politics. Basically जो politicians चाहते हैं आप वही कर रहे हो. They want to deviate you from main मुद्दा और आप लड़ने से वही exactly करते हो. Don't fall for it. Remain united. Always. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe to my channel, The Grey Rainbow. May God bless you with virtues of faith and patience. Sayonara.